Hello class 12th, I'm back with our second video. We are going to continue with the properties of charge. First video, last video में हम लोगों ने रिवाइज की थी properties of कुछ चार्ज की properties. यहाँ पर we are going to revise the remaining ones. कुछ बची हैं, conservation of charge, quantization of charge and the transferable nature of charge. ये तीन बची हैं, ठीक है. So what do I mean? मोटा मोटा समझते हैं पहले. When I say conservation of charge means if you sum up the total charges for an isolated system, the summation of the total charge will remain as constant. किसके लिए? For an isolated system, you know. तो किसी isolated system के लिए the total sum of the charges is constant. What do I mean when I say quantization? We were talking about quantization when I had stopped my first video in the same series. So quantization refers to that there exists a smallest indivisible charge and that is given in terms of the charge of electron. So we can write the mathematical expression Q equals to Ne. Quantization थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अभी. Then what is meant by charges are transferable? See, charges are basically transferable means the charge can be moved from one body to the other. एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज दे सकते हो. तीन मेथड है उसके, फ्रिक्शन या रबिंग के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू एंड इंडक्शन. तो देयर आर थ्री मेथड्स, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. शुरू करते हैं. सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन बी पुट अप इन नंबर ऑफ वेज, यू नो. कभी कभी बच्चे कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. करेक्ट. The sum of the charges for an isolated system समझते हो? Isolated system means it is a system which is having no sort of interaction with its surroundings. So for an isolated system, the total charge will remain as constant or sum of the charges will remain as constant. अब इसमें I'll give you an example ना, सुनिएगा. Suppose I take up a condenser having capacitance say C1. What I do is कि इसको चार्ज करते हैं initially through a battery. Let the accumulated charge be given as Q1. Then I take another condenser. इसको चार्ज करते हैं again through a battery which accumulates the charge on the capacitor or condenser say Q2. So what is the total initial charge of this system? You know, it is Q1 plus Q2. The total initial charge is Q1 plus Q2. Now what we do is we remove the batteries now. So we are removing the cells and now we are connecting the two of the condensers in parallel to each other. You can connect them in parallel or you can connect them in series. So in this case we are connecting them in parallel. So when we connect them in parallel, you know, in parallel the potential will become same and therefore the charges become Q1 dash and Q2 dash. Say, let the final charge means charge will be flowing from one of the capacitor to the other until their potentials are same. So in the process, the initial charge Q1 will change to say Q1 dash and the initial charge on second condenser will change to Q2 dash, say. So what is the final charge on this system? The final charge on the system is Q1 dash plus Q2 dash, right? This is the final. Now as per the principle of conservation of charge, the total initial charge will be equal to the total final charge, means sum of Q1 and Q2 will be equal to the sum of Q1 dash and Q2 dash. ठीक है. तो your conservation of charge principle, as you can see, becomes the basis for the evaluation of final charges in chapter capacitors or condensers. So this is what is meant by that the charges are conserved. ऐसे बहुत सारे examples हैं. I have given you one. आप पेयर एनिहिलेशन से भी दिखा सकते हो इसको, पेयर प्रोडक्शन से भी दिखा सकते हो इसको, चॉइस आपकी है. आई हैव गिवन यू वन एप्लीकेशन एरिया ऑफ दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वांटाइजेशन अगेन. तो डिटेल में थोड़ा क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं. नाउ क्वांटाइजेशन आई हैड गिवन यू द एक्सप्लेनेशन इन द फर्स्ट वीडियो. दोज हु हैव मिस्ड आउट उसको देख सकते हैं एक बार. लास्ट के आई सपोज 5 मिनट्स. इफ यू गो थ्रू इट, it will be clear to you what are the quantities that are quantized, number one, and what is actually meant by quantization. In this category or today's video, I'll be talking about the quantization of charge only.
Hence, I am talking about this expression. See, when you are writing this expression, you can write it as Q equals to plus minus Ne. Positive if the electrons are lost, negative if the electrons are gained. So, Q here is the charge occurring on the body. N is defined as the number of electrons. They will have values from 1, 2, 3 and so on infinity तक. फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज चार्ज का क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो स्मॉलेस्ट एंटाइटी है चार्ज का, उसको आगे तोड़ नहीं सकते, तो उसको कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज. नाउ चार्ज अकरिंग ऑन एनी बॉडी विल बी इन द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल. तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो मान लो उस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है. ऐसे नहीं हो सकता कि 22.5 इलेक्ट्रॉन्स है. इट कैन बी लाइक दैट बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड द इलेक्ट्रॉन फर्दर. हियर E is the charge of electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. ठीक है. इसके बेस पे चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं. That will be sort of, you can say, direct numerical on Q equal to Ne. Let us say कि there is a wire, you know, and in the wire there is 10 amperes of current flowing. So when I say 10 amperes, what does that mean? This means it is actually 10 coulombs of charge flowing in 1 second. इसको क्या बोलोगे? What is 1 ampere? It is 1 coulomb per second. तो 10 ampere क्या हुआ? 10 coulomb per second. Means 10 coulombs of charge is flowing across a given cross section in 1 second. Correct? तो अभी हमने कहा अगर वायर में है करंट 10 amperes, तो वी हैव टू टेल कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in 1 second cross the given cross section of the wire or conductor. So how we will solve? See, we know Q equals to 10. We don't know N, number of electrons we have to find. E, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पता है. तो 1.6 10 power minus 19 coulombs. We are going to use the formula directly and that will give us Q, that is 10, equals to N into 1.6 into 10 to the power minus 19. If I solve this one, so I'll get it as 10 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. This will be the number of electrons. Now class 12th, ये इधर थोड़ा कम दिख रहा है, कुछ पार्ट दिख रहा है सिर्फ, तो I'm writing it here. मैंने कहा n will be solved as 10 upon 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक. If I solve this one, I'll get it as 6.25. ये आता कितना है? 6.25 into 10 to the power 19, 20, 10 to the power 19 electrons, right? So these many electrons are crossing a given conductor in 1 second if the current flowing across it is 10 amperes. तो जब 10 एम्पियर करंट फ्लो करता है ना वायर में, तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एक गिवन क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर जाते हैं. सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज अ डायरेक्ट प्रॉब्लम, यू नो, अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं या जो आपसे पूछा जा सकता है, या विच यू मे इनकाउंटर इन योर बुक्स और असाइनमेंट्स एक्सेट्रा. Secondly, if I ask you, if you remember, मैंने कहा कि हम आपको दे रहे हैं 100 grams of water, that is H2O. Now I say कि what is the total negative charge of oxygen in this category? We have to find total negative charge, that is of electrons naturally, for oxygen atom. ठीक है. So this problem we are actually basing upon, अभी transferable हटाते हैं, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे. This problem is actually based upon mole concept. ठीक है. वर्कआउट कैसे करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम तक पहुंचना होगा. ऑक्सीजन एटम तक पहुंचने के लिए आपने क्या करना होगा? आप पहले वाटर के मोल्स निकालोगे, फिर उसमें देखोगे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, फिर उसमें देखेंगे एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. रिपीट, पहले मोल्स निकालेंगे वाटर के, फिर उसमें देखेंगे कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर, फिर देखेंगे कि एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यूनिटरी मेथड से. एंड व्हेन वी गेट टोटल इलेक्ट्रॉन्स वी कैन अप्लाई लास्ट में Q इक्वल टू Ne, दैट इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. लुक, स्टेप 1 वी फाइंड द मोल्स, in this case for water, formula mass
अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, सो 100/18. वी कैन राइट इट एज 50/9 ऑल्सो. सो दीज मेनी मोल्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट. सो अभी पानी के तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सही ना? वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? 1. तो एक मॉलिक्यूल एक एटम, तो जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे उतने ही एटम्स होंगे किसके? ऑक्सीजन के. सो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23. ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स मिल गए. अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8, एटॉमिक मास 16. तो O8 मीन्स एटॉमिक नंबर 8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. ऑन दीज मेनी अदर एटम्स, एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम्स में कितने होंगे? Therefore electrons in oxygen will be 50/9 into Avogadro number multiplied by 8. So now we have total electrons. Once you have total electrons, then use the quantization principle, Q equals to Ne. तो n रखिए भाई साहब, that is number of electrons 50/9 into 6.023 into 10^23 into 8 into charge of electron 1.6 10^-19 कूलम्स. हो गया? नहीं, नेचर भी तो लिखना पड़ेगा. द नेचर ऑफ द चार्ज विल बी नेगेटिव बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. सो इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम ऑन मोल कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ योर अप्रोच इज गोइंग टू बी. सीख लीजिए इसको ध्यान से फिर से एक बार. मोल्स, फिर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बाद जिस एटम तक पहुंचना है तो नंबर ऑफ एटम्स, फिर एटम्स के पहुंचने के बाद टोटल चार्ज पार्टिकल्स मे बी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो पूछा गया है, एंड देन अप्लाई लास्ट में Q इक्वल्स टू Ni. ठीक? सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी टैकल्ड. सो वी हैव डन विद क्वांटाइजेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल. वी हैव डन विद कंजर्वेशन, उसका एक इलस्ट्रेशन भी दिखा दिया आपको. वी आर लेफ्ट विद ट्रांसफर ऑफ चार्ज. 3 मेथड्स हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन. उनकी बात करेंगे अगले वीडियो में. इसको देख लीजिए. कोई डाउट हो कमेंट्स में पुटअप करिए. बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी कुछ फ़ायदा मिले. एंड इफ यू न्यू टू द चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.